सो आज क्लास रे हम डिस्कशन करिबा डॉकर वॉल्यूम ऊपर डॉकर वॉल्यूम कौन राइट आउ एटा केमती काम करछि और बेसिकली कौन पई हमें यूज करिबा तो डॉकर वॉल्यूम्स परसिस्टिंग कंटेनर डाटा माने कंटेनर डाटा को परसिस्ट करिबा पई हमें डॉकर वॉल्यूम यूज करिबा डाटा और तमे कहि बेरो डाटा परसिस्टेंस इन डॉकर तो तुमको जो क्वेश्चंस आसीबो डॉकर वॉल्यूम ऊपर ए टाइप रो पचबे हाउ यू कैन परसिस्ट डेटा इन डॉकर बाय यूजिंग डॉकर वॉल्यूम राइट then the question is how you can persist data in docker by using docker volume. Persist means how you can save the data or keep the data for future reference or kind of a backup, right? How you can persist the data. So हमें देखिए डॉकर वॉल्यूम्स कौन तम केमती हम तक यूज करबा और तार बेनिफिट्स देखियो राइट सो तर इस बाकी कमांड अच्छा में कमांड ता परे डिस्कशन करिया ता पूर्व हम जानिबा डॉकर वॉल्यूम्स केमती काम करछि ओके so when a container runs it uses the various layer from an image for its file system. Each container also gets its own scratch space to create, update or remove files. Any changes won't be seen in another container even if they are using the same image. So container volume कौन जेन कहला गोटे कंटेनर कौन जब गोटे कंटेनर रन होची नॉर्मली कौन कहूची से गोटे देखो हमें तो इमेज व्हाट इज द image the it's kind of a recipe or template or we can say the instructions for the container or for the applications to run inside the container. So जो instructions लिखा ही थी right so various layers रे लिखा ही थी तो से जो layers रे various layers लिखा होचे से तो file system रे गोटे file system बा storage place रे से कोन रहउची तो ता पय हमको कोन दरकार गोटे storage system बा volume दरकार तो container volume कोन The volume provides the ability to connect specific file system. जो file system रे हमर image layers रोज file system paths of the container back to the host machines. जो container run होची right कोठी run होची container हमर कोन host machine रे run होची right तो host machine रे गोटे कोन file system थिबा हमर जोटे कि हमर फाइल स्टोर करिबा पई डेटा स्टोर करिबा पई डिफरेंट पार्टीशंस थिबो ओके सो व्हाट इट सेज वेरियस वॉल्यूम्स प्रोवाइड एबिलिटी टू कनेक्ट स्पेसिफिक फाइल सिस्टम पाथ ऑफ द कंटेनर बैक टू द होस्ट मशीन जो फाइल सिस्टम पाथ रे तमे डेटा स्टोर करिया को चाहूचो से स्टोर सही पाथ को तमे कनेक्ट कर दो वॉल्यूम को तो ऑटोमेटिकली द कंटेनर डेटा विल गेट स्टोर्ड इन दैट फाइल सिस्टम और इन दैट पाथ. If you mount a directory in the container, changes in that directory are also seen on the host machine. If you mount that same directory across container restarts, you would see the same file. तामाने कौन कहला देखो let me show you, let me tell you the behavior of a container. The first thing होची what a container behavior कौन container volume बुझिबा अगर हम कहि दोस तुमको तो गोटे कंटेनर कौन हमें तो गोटे कंटेनर क्रिएट करिवा राइट हमें तो कंटेनर क्रिएट करिवा तो ये कंटेनर टा कोन होची रन कला पर हमें कंटेनर रन होची तो जेते बळे कंटेनर डेड हे जीवो बा हे जीवो राइट बट हमें टर्मिनेट कर देला हमर दरकार नहीं डिलीट मार देले तो जो भी डेटा व्हाटएवर डेटा विल बी प्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ दिस कंटेनर तो कंटेनर कौन रहउची एक्चुअली हमें जान छे कंटेनर होल्ड्स एन एप्लीकेशन इनसाइड इट तो एप्लीकेशन जेतले गोटे रन होबो से कोन करिवो डेटा सब जनरेट करिवो लॉग्स राइट लॉग्स फाइल बा कोनसी डेटा रिपोर्ट्स सब जनरेट होबो तो से जनरेट हे कि डेटा कोडी स्टोर होतिबो कंटेनर भीतर बेसिकली राइट तो हम जब कंटेनर को गोटे डिलीट कर दवा बा रिमूव कर दवा तो से डेटा कोन हे जिवो लॉस्ट हे जिवो will not get back those data. So how we can persist those data? By using container volumes or docker volumes. तो हमें docker volume use करके जो data
बाय डिफॉल्ट जदि आमे वॉल्यूम गोटे कनेक्ट करी नथिबा बा सेट करी नथिबा कंटेनर कोन हो ता डेटा को सब जदि आमे कंटेनर डिलीट कर दा ता डेटा भी कंटेनर सहित डिलीट हे जिवो त आमे डेटा चाहिबा आनिबा पय आनी परिबानी तो ता पय कोन करबा आमे वॉल्यूम यूज करबा टू स्टोर द कंटेनर डेटा इन होस्ट मशीन तो ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଲେଖିଛି if you mount a directory in the container changes in that directory are also seen in the host machine तो जो डायरेक्टरी को हमें माउंट करिबा का सहित वॉल्यूम सहित राइट तो वॉल्यूम होस्ट मशीन रे हमें जो माउंट करिबा तार कंटेनर डायरेक्टरी को हमें होस्ट मशीन डायरेक्टरी को माउंट करिबा तो बर्तमान कौन होगा ना कंटेनर जो डायरेक्टरी को हमें माउंट करने चाहूँ जो डायरेक्टरी डेटा स्टोर हो से सब डेटा कौन होस्ट मशीन डायरेक्टरी स्टोर होगी रही आमर जब कंटेनर पलाऊँगी देन स्टिल विल गेट आवर डेटा इनसाइड द होस्ट मशीन गॉट इट तो कंटेनर वॉल्यूम रो मेन यूसेज एतिकी खाली तो मुझे जहाँ कहली कंटेनर से यूज होची कंटेनर वॉल्यूम से यूज होची ओके तो वॉल्यूम वर्सेस माउंट पॉइंट्स हमें जब जानी तो डॉकर प्रोवाइड्स वॉल्यूम्स एंड बाइंड माउंट्स गोटे प्रोवाइड करछि वॉल्यूम्स और गोटे बाइंड माउंट्स टू मेकानिज्म फॉर परसिस्टिंग डेटा इन योर डॉकर कंटेनर आइदर तुम कौन बाइंड माउंट्स यूज करि परिबो बा वॉल्यूम यूज करि परिबो तो बाइंड माउंट्स रे कौन होछि ना इट विल माउंट ए फाइल और डायरेक्टली टू द कंटेनर तामाने कौन हला धरो हमर गोटे कंटेनर अछि एटी राइट तो कंटेनर कोडी हमर गोटे कौन लैपटॉप बा भीतर रन होउतिबो तो ये कंटेनर रो गोटे कौन हमर पाथ थिबो जोटी हमर एप्लीकेशन रन होउतिबो सपोज टीएमपी डेटा इटी हमर ऐप ना सपोज रन होउची ए पर्टिकुलर पाथ रे तो ये जो डायरेक्टरी तो आमर कौन करबा ना ए डायरेक्टरी को हमें कौन करबा माउंट कर दो हमर सिस्टम पाथ भीतर सपोज टीएमपी डेटा सपोज से एप्लीकेशन ना दे दल सिस्टम एप्लीकेशन बा बैकअप किछि भी गोटे बैकअप एप्लीकेशन ना दे बैकअप ऐप गोटे ना दे दल डायरेक्टरी ना तो कौन होबा ना ए डाटा को हमें तले माउंट करि दबा डायरेक्टरी सहित माउंट कर दो माने हम डायरेक्टरी जहाँ भी डाटा सेटा कौन हम ये स्टोर होगी रही बाइंड माउंट तो आम यहाँ कौन जब यहाँ भी डिलीट हो कंटेनर देन वी कैन स्टिल गेट द डाटा इन द बैकअप फोल्डर ऑफ द होस्ट मशीन बुझी पाला क्लियर बट डॉकर वॉल्यूम केस से कौन होची इट्स कंप्लीटली हैंडल्ड बाय डॉकर तो तुमको ये माउंट आउ सेटअप करिया पड़िबनी तो दैट माउंट कैन बी नाउ टेकन केयर बाय डॉकर वॉल्यूम तो डॉकर वॉल्यूम ऑटोमेटिकली से माउंट तुम कर दबो राइट डॉकर वॉल्यूम्स आर कंप्लीटली हैंडल्ड बाय डॉकर इटसेल्फ एंड देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ योर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड द ओएस ऑफ द होस्ट मशीन तमे कौन होस्ट मशीन रे जो भी डायरेक्टरी तमे वॉल्यूम क्रिएट करो से तार गोटे वॉल्यूम रो डायरेक्टरी क्रिएट करो से डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली तमे जो वॉल्यूम रे माउंट करे पे चाहो से माउंट कर दो okay so when you use a volume a new directory is created within docker's storage directory on the host machine रे one directory create करिम तो हमें जो भी एग्जांपल नबा तादरम तो देखे देबी okay and docker manages that directory contents okay so volumes are easier to back up and migrate than bind mounts volumes are easier to back up and migrate than the bind mounts तो सेति पे bind mounts अपेक्षा हमें कोन docker volumes यूज करिबा ओके सेटा जोडा मु एटा तुमको जोडा बतेली बतन एट से सेम जिंस लिखाई छी तो एटा हमें केमती यूज करिबा वर्तमान तुमको दउची ता पई किछि सिंपल कमांड्स अछि से कमांड वर्तमान हमें एटी देखिबा ओके तो कमांड लिस्ट केमती आछि तो हाउ वी कैन क्रिएट ए docker volume create volume वाला कोन मैनेजमेंट कमांड रहइबो then create volume ना कौन वॉल्यूम माई वॉल्यूम बा तुम हिसाब रे तुम वॉल्यूम ना देल तो वॉल्यूम को लिस्ट एटा कोन क्रिएट कर दबो लिस्ट करिया पे वॉल्यूम ls डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट माने गोटे वॉल्यूम को चेक करिवा पई इंस्पेक्शन करिवा पई इंस्पेक्ट करिवा पई यूज करबो डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट रिमूव करिया पे rm कमांड ओके तो स्टार्ट ए कंटेनर विथ ए वॉल्यूम जेतो गोटे कंटेनर तुम स्टार्ट करिवो
start a container with a volume तमें कौन करिवे गोटे वॉल्यूम ऐड करिवो केमती ऐड करिवो ना बाय यूजिंग एटा मन रखता हाइफेन v आ वॉल्यूम नेम जो वॉल्यूम टा मैं क्रिएट कले बाय यूजिंग हाइफेन v वॉल्यूम नेम एंड कोलन कोलन दबो इटी कंटेनर डायरेक्टरी एतिकी तमें कंटेनर डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी की तमें चाहछो माउंट करिया पई वॉल्यूम सहित कंटेनर रो सही डायरेक्टरी टाको एटी सेट करिवो तापर कोन इमेज नेम जो इमेज देला कंटेनर क्रिएट होवा पई तो डॉकर रन ल तो एटा कोन हला ना स्टार्ट ए कंटेनर विथ ए वॉल्यूम सहित गोटे कंटेनर को स्टार्ट करिया पई हमें यूज करिवा तो स्टार्ट ए कंटेनर विथ होस्ट डायरेक्टरी एज वॉल्यूम तो होस्ट डायरेक्टरी एज ए वॉल्यूम हाइफेन v तमरो जोटा की बाइंड माउंट थिला राइट से टाइप रो तमे डायरेक्टरी बोथ होस्ट डायरेक्टरी एंड काइंड ऑफ कंटेनर डायरेक्टरी दो ऑटोमेटिकली से कोन कनेक्ट हे जिवो राइट फॉर एग्जांपल साइड देछि तो हमें वर्तमान चेक करिबा केमिति हमें कोन वॉल्यूम क्रिएट करिबा ओके सो लेट्स गो टू द मशीन ready गलानी okay so I just connected to the docker machine now so if I just do docker container ls see it's not working so what is the problem it says permission denied then we should make it as root user or super user so if I do docker container ls it will give us the containers okay so guys we are using this docker container ls this is the latest command provided by the docker so before the older version of the docker you will not find this command the older version of docker container ls will not find this container ls command it might not work so in that case what you can use docker ps command the same thing whatever docker ps this ps command you know linux command right to check the process status similarly to check the containers you can use ps now हमें ps -a यूज कर परिबा देखो all container -ps -a same जदि -container ls -a मारुची देखो तो कहबार तात्पर्य कौन होची ना docker ps command टा docker versions so what is the docker version now docker version see 25.0 so prior to docker 12 or something right so very old versions सेतले कोन ना docker ps काम करतला docker container ls नथिला तो वर्तमान लेटेस्ट वर्जन में बीटा का जो कमांड तमे एग्जीक्यूट कर परिबो तो गोटेला कोन docker ls कंटेनर टा कोन हम जानले मैनेजमेंट कमांड ता सहित कमांड तमे एग्जीक्यूट कर परिबो कोन तमे करियो को चाहूछ ता पूर्व हम यूज करथिल कोन docker ps कमांड मोर किछिला वीडियो भी देखिबो तमे पुराना वीडियोस दिबो सेते मु docker ps यूज करथिबी सो डोंट गेट कंफ्यूज जोडी देखितियो मु docker पुराना वीडियो कमांड्स किछि यूज करछि त बर्तन तमे भी यूज करि पारिबो लेटेस्ट वर्जन रे भी तमे स्टिल यू कैन यूज द ओल्डर वर्जन ऑफ द कमांड्स बट द ओल्डर वर्जन docker रे तमे लेटेस्ट वर्जन कमांड को एग्जीक्यूट करि पारिबी नाही एटा मने रखिताओ जेमितले जेमति कि आज से पिला कहउतला क्वेश्चन ताको आस्तला सेही टाइप रो पचारला जे तमे docker ताको डायरेक्ट मशीन दे देला कहला कंटेनर कोन रन होची देखाओ मते तो से कोन docker container ls मारुची काम करूनी राइट काम कलानी से भी टिके नर्वस इसला काम काई करूनी हम काम करछि ता मशीन रे बट एठी काम करूनी तापर पुणी जतो से docker ps माला काम कला राइट तो ताको पछाला कोन तो docker container ls ता करेक्ट कमांड ना नाही तो से टिके नर्वस हेल तथि कहला हां करेक्ट कमांड तो से पहले काहे एठी काम करूनी देन व्हाई इट्स नॉट वर्किंग इन दिस मशीन तो आंसर कोन हो the docker version which your machine is having is older versions which does not contain this docker container ls commands जो पैकेज इंजन वर्जन्स ता इंस्टॉल हेची docker ता बहुत ओल्ड वर्जन जोटा कि docker container ls
सपोर्ट करूनी सिंपल आंसर राइट बट सेटा को तुमको से बुलाई करी पचार देबे केतबळे तो सेटा बी रेडी टू आंसर एंड बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज सबु आडरू सबु एंगल रु देखि कि तुम प्रिपरेशंस तो होइता जेमि सब बळे कुए गोटे आंसर गोटे सॉरी गोटे क्वेश्चंस रो जेमि मल्टीपल आंसर दवा पई तुम रेडी थी राइट फाइन तो एटा हम देखले डॉकर पीस तमे वॉल्यूम ऊपर जानिबा राइट तमे जतबळे डॉकर हेल्प यूज करिवे तमे देखिथिले मैनेजमेंट कमांड भितरे राइट कोन अछि मैनेजमेंट कमांड रे हमर नेटवर्क वॉल्यूम अछि टू मैनेज द वॉल्यूम्स राइट तमे एठी जदी वॉल्यूम हेल्प मार्चुमोजी देखो ए सब सिंपल कमांड्स एती कमांड तमे वॉल्यूम ऊपर जानिबो कोन क्रिएट ए वॉल्यूम इंस्पेक्ट ए वॉल्यूम लिस्ट ए वॉल्यूम प्रून जो वॉल्यूम टा यूज होई तको प्रून करियो डिलीट कंप्लीट ऑल वॉल्यूम्स प्रून मार करियो आरएम अपडेट ए वॉल्यूम क्लस्टर वॉल्यूम्स जे क्लस्टर वॉल्यूम अछि अपडेट करियो बस एती की चार पांचटा कमांड तुमको मन रखियो पड़ी ओके नाउ लेट मी शो यू वन वॉल्यूम क्विकली सो हम कोन करबी डॉकर कंटेनर क्रिएट डॉकर कंटेनर सो हम कंटेनर काई यूज कले कंटेनर यूज करे किछ नै तो मते यूज करे छी डॉकर वॉल्यूम राइट लेट्स डॉकर वॉल्यूम राइट देन व्हाट आई हैव टू यूज क्रिएट टू क्रिएट ए वॉल्यूम ना देबी सपोज मुदली किछ ओडे तुम्हारे प्रोजेक्ट हिसाब रे काहे भी ना हिसाब रे व्हिच शुड बी नो रिकॉग्नाइजेबल by the team by you right you can provide it so as per the project requirement तुम वॉल्यूम गोटे क्रिएट करला तुम गोटे वॉल्यूम कर देली कोन टेलीकॉम वॉल्यूम तुम ऑल टेलीकॉम रिलेटेड एप्लीकेशन बा कंटेनर जहां भी रन होतो मु त कोन ए वॉल्यूम रे मैप कर देबी बा माउंट कर देबी राइट लिंक कर देबी तो वर्तमान कोन वॉल्यूम क्रिएट हेगला तुम तब मुझे चेक करबी कोन डॉकर वॉल्यूम एलएस देखो ड्राइवर लोकल टेलीकॉम वॉल्यूम्स राइट तो ये वॉल्यूम्स टेलीकॉम रो पाथ को पाथ रे एक्चुअली कोन सिस्टम एटा कोन वॉल्यूम जो नाटा क्रिएट हला गोटा होस्ट मशीन रे गोटे पाथ रे डायरेक्टरी रे माउंट हेतिबो बा क्रिएट हेतिबो कनेक्ट हेतिबो तो सेटा को जानिया पे हमु कोन करिया पड़िबो इंस्पेक्ट यूज करिया पड़िबो मतलब वॉल्यूम को तार इंस्पेक्शन करिया पड़िबो राइट वर्तन इंस्पेक्ट वाले देखो से इंस्पेक्ट पूरा हमको जेसन फॉर्मेट रे शो कला राइट केतबळे क्रिएट हेतिला तार ड्राइवर कोन यूज हेछि लेबल कोन माउंट पॉइंट तार माउंट पॉइंट हमें जानिबा त माने हमर जो वॉल्यूम क्रिएट हला तार डाटा सब एई डायरेक्टरी रे स्टोर हो एई डायरेक्टरी रे सब डाटा स्टोर हो मन रखता तमे जे डायरेक्टरी जानिबा पई कोन करया पड़ी पर्टिकुलरली इंस्पेक्ट करिवो सेई वॉल्यूम को देन तम पाइ छै ओके तो एटा हमर कोन गोटे वॉल्यूम क्रिएट हेगला नाउ लेट्स क्रिएट ए कंटेनर using this volume a volume ta hame container create bale so let's create the container and map the volume so what I can use docker container run -g and just give a name as web server here and just give the volume as or you can just publish the port first 8080 host port 80 and container port 80 and then we'll just map the volume -v the volume name so volume name we created as telecom right and then just give the container path container directory which directory you want to mount it suppose in our case I'm going to make it as the Apache's root directory that is htdocs where our website will be deployed okay so it is user local and Apache 2 then we can use as htdocs as I showed in our image right so we'll put it as htdocs here so now what I will do and give the image as httpd give the image as httpd so here
I did a mistake. It's not telecom, it's a telecom vol. So the volume name is telecom vol, and then the container path directive which you want to mount with this volume. Okay, now let's go ahead and create a container. So we got the container created. So what we can do now, we'll just access this file. Okay, let's see whether this server is accessible or not. So if I go and get the IP address and just put it here and hit, so it says it works. That means the container, the Apache container is working fine. Okay, but now here what happened? We just created a volume and we mapped the volume. So if we go to the volume directory, right? So how we can go, as I showed you, right? So we can just inspect the volume. You can go, or basically what happens, the volume gets created under the volume directory in the Docker folder. Okay, so where it can be, so let's first inspect the volume. So if I just do Docker volume inspect and the volume name, right? Telecom vol. So what happened? Here is the directory where the path, the mount point, like where the data will be stored in the volume. So how it is? So it is the var lib docker. This is the Docker home directory where we have the volumes. Under these volumes, the volume name and underscore the data. So each volume, whatever we create, it will be like this. The mount point will be named based on that volume name. It will be created. All the data will be stored here. Okay, so what we can do now, so let's copy the index file, whatever we had created in our last class. So this index.html to this particular directory path. Okay, so if I just do simple cp, because this is the Linux environment, I just want to copy a file index and I just want to copy it to this directory. Okay, so copy it. Yes. So our file copy ହେଇଗଲା तो एबे कौन करिया ना, we got this file copied, right? तो एबे हमें कौन करिया, just let's go ahead and refresh this. See, तो हमारा index file रे कौन थिला, hello docker and welcome to docker class, right? तो एठी कौन हैला ना, मु लास्ट क्लास रे हमें देखितले कौन ना, जो फाइल को हमें कटे जस्ट डायरेक्टली कॉपी कर देते, राइट? कोडी की कंटेनर भीतर को, राइट? यूजिंग डॉकर सीपी. बट नाउ हम कौन करना, से फाइल को जस्ट हमर जो वॉल्यूम क्रिएट करले से वॉल्यूम पाथ भीतर बा वॉल्यूम डायरेक्टरी भीतर फाइल को डायरेक्टली कॉपी कर देली. जेतो जो वॉल्यूम डायरेक्टरीटा हमर कोन कंटेनर डायरेक्टरी से तो मैप हेके अछि, जहां भी फाइल मु रखिबी कोडी volume with that will reflect to the container. And the same thing also, the vice versa, if I keep anything, right, the container, so हमें कौन जानचे ना, container रे जहाँ भी data generate होची सेटा हमरो host volume रे store ही रहिबो. The container जो path रे हमें कौन mount करिचे. Let's connect to the container. So how we'll connect it? So we can use docker container exec -it, then container name or container ID, right? Container ID. Then just give a command called as pass. See, I did a mistake, I believe. Docker container exec container spelling mistake. Okay, so let's go here. Container exec container. So बर्तमान कौन कली container को connect हेगली तार working directory एटा future local apache 2. So आमे जदि एठी के जिबा देखिबा एठी कोन अछि ना, गोटे htdocs फोल्डर अछि, जो फोल्डर को आमे इंडेक्स फाइल आमे कोन कॉपी करछे बा कॉपी करछे इन द सेंस आमे जोटा वॉल माने कंटेनर क्रिएट कला बळे मैप करछे, राइट? त आमे जदि htdocs को जिबा ए पर्टिकुलर पाथ हमर इंडेक्स फाइल ता अछि. सो ये इंडेक्स फाइल ता कोड अछि ना, द वॉल्यूम भीतर अछि. तो मु एबे कोन कंटेनर को क्रिएट कंटेनर को कनेक्ट करछि, कंटेनर इनसाइड कंटेनर रे अछि. तो मु एठी जदि किछि फाइल गोटे रखुछि htdocs भीतर, राइट? लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट a file called test.txt.
dot txt, right? ଗୋଟେ txt file create କରିଦେଲି, right? ଏଟା କୋଉଠି create କଲି ନା ମୁଁ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ। ଯଦି କଣ୍ଟେନର ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ମୁଁ जो वॉल्यूम डायरेक्टरी थिला, राइट? से वॉल्यूम डायरेक्टरी ଭିତରକୁ ଯିବି, right? Let's go to the volume. कौन थिला सेटा हमर चेक करिवा से पाथ। ओके, सो बेसिकली तमे कोन इंस्पेक्ट करि परिबो वॉल्यूम को बा इंस्पेक्ट करि परिबो कंटेनर को, तमे से पाथ टा पाइबा पई को पाथ तमे एक्चुअली माउंट हेछि। लेट मी शो यू हाउ वी कैन inspect the container and what are the details we'll get it. So हमें जब container को inspect करिवा, right? Docker container inspect, right? Container ना web server, right? So पूरा details container ABCD सबू तुमको देना पड़ेगा, IP address, the gateway कौन, complete details, endpoint, right? See, complete details. या वर्किंग डायरेक्टरी कौन, वॉल्यूम को वॉल्यूम अछि, कौन इमेज ऐड अछि, अटैच माने क्रिएट यूज अछि, राइट? तो हमरा और वॉल्यूम सेक्शंस गोटे तो माउंट सेक्शन से माउंट सेक्शन रे कौन वॉल्यूम्स यूज अछि, राइट? एंड वॉल्यूम कौन टेलीकॉम वॉल यूज करछि गोटे क्रिएट करिछे, से वॉल्यूम रो सोर्स पाथ ता हमको एटी मिलि जो तमे कोन var leaf docker volumes telecom wall and underscore data. सो एटी एक्चुअली हमर कोन डेटा जहां भी डेटा स्टोर हो कोडी कंटेनर को पात्र डेस्टिनेशन पाथ कौन अच्छी htdocs हमें देइछे, राइट? तो क्रिएट कले कंटेनर ए पाथ ता हमें माउंट करतले, तो ए पाथ रे फाइल स्टोर हैला, तो ई जहां भी फाइल इट स्टोर हो it will reflect here, and whatever it file will store here it will also reflect here in container. So container हमें जहां रखिबा जहां भी फाइल जनरेट हो सेटा हमरो होस्ट मशीन रे से वॉल्यूम रे रिफ्लेक्ट हो, और होस्ट मशीन रे जहां भी फाइल रहबो सेटा हमरो कंटेनर रे रिफ्लेक्ट हो, राइट? सो मैं बे कोन कली कंटेनर गोटे test.txt फाइल को टच कली, गोटे फाइल क्रिएट कली, को फाइल सेटा ना हमरो जियोबाइट फाइल गोटे सिंपल फाइल क्रिएट कली. लेट्स गो टू द वॉल्यूम्स डायरेक्टरी, सी test.txt. सो कंटेनर जहां भी फाइल क्रिएट हैला से फाइल सब जगह कोन test.txt बा index.html सब किछि एठी प्रिजर्व हेकी बा परसिस्ट हेकी डेटा हमरो सेव हेकी रहिला. तो सपोज हमें कोन करबा ना कंटेनर को डिलीट कर दवा, डॉकर को फोर्सफुली कोन करछि ना कंटेनर को डिलीट कर दोछि, कंटेनर rm-f वेब सर्वर, ओके हम कंटेनर बटन डिलीट हो. तो सही हिसाब रे हम जदी एप्लीकेशंस को देखिबा, एप्लीकेशंस आल्सो विल गो डाउन जेतु कंटेनर हमरो डिलीट हेगला, एप्लीकेशन आल्सो नॉट अवेलेबल. तो हमर जे डेटा अछि से डेटा रहिबो ना नाही. सो ई पाथ रे हमर डेटा अछि, तो हमर बर्तन कंटेनर नाही बट डेटा, लेट्स सी these data are available now. Data are available because our volume टा कोन अछि से volume टा still available, that volume is still available. मुझे यदि चाहूँ जे आउ गोटे कंटेनर क्रिएट करिया पई, राइट? सी मुझे आउ गोटे कंटेनर क्रिएट करिवि द सेम नेम बट म नेम टिके चेंज कर दो, वेब सर्वर आप दे देली, गोटे किछि नुवा डिफरेंट ना दे देली बट सेम इंफॉर्मेशंस रहिला, राइट? कोन आउ गोटे नुवा कंटेनर क्रिएट हेला, राइट? मुझे से कंटेनर से पर्टिकुलर आईपी को यूज करबे अगेन एंड रिफ्रेश, सी तमर जहां भी डेटा थिला प्रिजर्व हेकरी persist हेकरी कोडी वॉल्यूम रे सेम डेटा वी कैन यूज नाउ इन द here also. So now the data can be saved, right? तो बुझी पाला केमती वॉल्यूम्स हमरा यूज करियो, वॉल्यूम कम पई एक्चुअली दरकार कंटेनर